जब से गुलाबी साड़ी has come out, I'm getting a lot of attention. Good attention, bad attention, it's attention. And it is very overwhelming. I was just praying कि एक गाना मिल जाए. And then somebody went and told Karan sir that Anjali dances very well. Smile तू बीच में, रणवीर और आलिया तेरे आजू बाजू है. Or in the center, you're the star, baby. You have to do it very well. Expression, smile, पंखा चलेगा. Are you not nervous ना? Said no man. First take हुआ and she kept the mic and she like लड़की तो one take okay है. Me being new also, Ritesh was so motivating and he was so great with me, you know, being someone, because they don't know what I have done, they don't know who I am, they don't sit and watch interviews at home and they don't do all of that. Now that they know me and the way they see me, and I love the shock that they get, "Arey, this girl is so good, let's do more," and they want to do more. They're not trying to put me down. So I just hope मुझे ऐसे लोगों के साथ काम मिलते रहे. You know, even in the trailer we saw थोड़े से है fat shaming, body shaming वाले jokes है, which is honestly the society we live in. Have we not heard मैं these यही things? बोल रही हूँ सब. जब तक मुझे लोग मोटा इंटरनेट पे बुलाते रहेंगे, उतना मोटा मुझे पिक्चर में भी बुलाएंगे ना. तुम यहाँ बंद करो, तुम बोलो नहीं अंजलि को हमको नहीं देखना है, ये उसकी आइडेंटिटी नहीं है, ये उसकी आइडेंटिटी नहीं है, शी इज एन एक्टर, शी इज दिस, शी इज दैट, तो लिखेगा ना कोई रोल मेरे लिए. किसको ले लिया एंड ये कैसी हीरोइन है एंड ऑल दैट. डू पीपल स्टिल से ऑल ऑफ दीस कमेंट्स देखो कितना अटेंशन मिल रहा है मुझे, विच इज ग्रेट. बट देखो कितना लोगों की असलियत भी सामने आ रही है, उनकी इनसिक्योरिटीज सामने आ रही है. And I hate talking about my body, but everybody obviously ends up talking about my body at the end of the day, so I have to defend it. गाय, भैंस, हिपोपोटामस, जो बोलना है बोलो, एलिफेंट बोलना है बोलो, मैं टीवी पे हूँ, चुपचाप घर पे बैठो. लोग बहुत खुश होते हैं ना कि मेरा नया प्रोजेक्ट आ रहा है, वाओ मैं इतनी दिखूंगी. मेरे को और टेंशन होती है कि इतना प्रोजेक्ट आ रहा है, मैं अभी इतनी दिखूंगी, उतना ही लोग मेरे पे कमेंट करेंगे. इसको क्यों लिया पिक्चर में, अरे हाउ मेनी यू नो व्हाट मस्ट शी बी डूइंग स्पेशल फॉर पीपल दैट उसको पिक्चर में ले रहे हैं. तो बहुत गंदे कमेंट्स आते हैं. अगर मुझे इतना आगे तक भगवान ने पहुंचाया है, कौन आया है इस कैटेगरी में इतना आगे आज तक. So let's pave the way for so many other girls who have a dream. Each time I have seen her act, I've forgotten that she's acting because she's so natural and gives her all to each and every role that she plays. Welcoming Anjali Anand, who is literally making it harder for us to watch Dhamal 4 because she's everywhere and she's looking as, you know, pretty as a gulab today. Welcoming her on FPJ Showbiz. Hi Anjali, thank you so much for doing this. Thank you so much for having me. Your introduction had me in tears. Oh. It really did. But you know, I know the last time we spoke, it was almost a year and a half back, and I know how much all of this means to you because you have really worked hard for it, for this day to come and for many more days like this. How does it feel? Does it become overwhelming? I don't know why I'm getting goosebumps asking this. See, I'm always in tears. Yeah. I'm always stopping tears every day. It is very overwhelming because ऐसा लगता है ना बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है, एक दिन होगा. और अभी हो रहा है, you know, पिछले कुछ दिनों से जब से गुलाबी साड़ी has come out, I'm getting a lot of attention. Good attention, bad attention, it's attention. And it is very overwhelming. I still don't believe that this is happening and more people know that I exist. It's just amazing. And I'm just hoping that I, you know, get to do more, get to play more parts. I keep making myself better. So I just hope it works out in my favor this time. Amazing. I hope so too because as I mentioned, you know, when you act, it doesn't look like it's acting. And I think that's the biggest compliment an actor can get because I forget that, okay, this is Anjali, she's playing a part. I start looking at her as what she's playing. And, you know, Raj Jawan Hai was one such project. It's my favorite. Yeah. How do you manage to do that? Is it natural? It comes naturally to you. Naturally. Wow. I don't know how I do it. I don't know how I do it. I have no method. There is no method to this madness, but there's a lot of internal work that goes in. There's a lot of life experience that goes in. I did a 4 to 6 month course with Barry John, with Saurabh Sachdeva sir, and I think a lot of that has also, you know, taught me a lot about myself and being more in touch with who I am. And I think all my emotions are right here always. Yeah. I'm just like, see, I would have cried. I would have broken down completely. Like you just said something so nice about me and I'm not used to it. I can't take compliments. I'm very shy when it comes to all of that. I don't know how to, you know, behave in front of paps. I don't know how to fake say hi, thank you. Oh, aap log yahan. I can't do that. I will always say thank you for coming because जब तुमने बुलाया है तब तुमने बुलाया है, and when you're actually when they're actually there, and they're always very sweet to me and they cover me very nicely and all the Anjali happens and it's sweet. Yeah. And I still can't believe that all of this is my life and you know I've actually done it because you know. And
for people like us, it's a little more difficult than the rest, Yes, and it's it okay. is. It's It's our fine, reality, yeah. and we own up to it. Yeah. And we are not like everybody else, and that's okay. And people's perception might change a little more now. मैं ही बदलूंगी. Absolutely. But let's talk about Dhamal, because when the first one had released, we were of course kids, like, Kids, yeah. and it was such a big movie, and we still call it a cult classic. And being a part of that franchise, and having such an impactful part, because now people are also associating that movie from your name. Very fewer times this happens, because no, I'm cried. being honest, because of the song also things changed, right? How did this fall into place, and Dhamal come to I you? have manifested being in a song. Like when I was doing Rocky Rani, I was just praying कि एक गाना मिल जाए. And then somebody went and told Karan sir that Anjali dances very well. हाँ. And last minute he's told Vaibhavi ma'am कि इसको अंदर end में घुसाओ, एक step करवाओ. अच्छा. She suddenly came and said like, who is this new girl Karan wants me to put in the song? I said, ma'am, me. Like, बेटा कर लेगी? I said, हाँ कर लूँगी ma'am. She's like, okay. Then she came before my take and she's like, स्माइल हाँ तू बीच में, रणवीर और आलिया तेरे आजू बाजू है, और इन द सेंटर, यू आर द स्टार बेबी, यू हैव टू डू इट वेरी वेल, एक्सप्रेशन, स्माइल, पंखा चलेगा, आर यू नॉट नर्वस ना? Said no ma'am, and her assistant is my best friend. So she knows I can do it, but she didn't tell her anything. She just said ma'am वो कर लेगी, and she knows me, she knows मेरे अंदर कितना बड़ा फिल्मी कीड़ा है. तो फर्स्ट टेक हुआ एंड शी केप्ट द माइक एंड शी लाइक ये लड़की तो वन टेक ओके है. एंड शी टोल्ड मी दैट टाइम कि आई होप द नेक्स्ट टाइम आई एम विथ यू आर डूइंग अ फिल्म with your own song solo that I am shooting for you. And she said that to me, and that again made me cry. I'm a crier. And I just manifested this, and somebody also just that day messaged, okay, I can't wait to see you in your own song. And my friends keep telling me, because they know how I am, and very big nachaniya I am. I love dancing. And yeah, तभी रणवीर के साथ था, and we are almost like the same person. We are full filmy, we are full energy. And now it's with Ritesh, and he's also so much energy, and I love him. He's so cool, such a nice man. And I just got to do this, and I was just waiting for the opera. When I got the call, हमारी मूवी खत्म हो गई थी, गाने वाने नहीं होने वाले थे, and last minute T Series decided we want to put an album out, because movie was looking great. Yes. And they said, Anjali, we want to put you in a song. I was like, okay. Then they said, we want to put you in 2 songs. I said, okay. I was like, कोई तो ऊपर है जो मेरे फेवर में चीजें चेंज कर रहा है. बस I hope अभी बस कुछ कमाल हो जाए. हो रहा है already, and I think of course 10th July is the day when everyone gets to see the magic. The day all my days of my calendar are filled with a shoot of the year is the day I will be satisfied, and is the day I will feel that I have arrived. That every day of my calendar should be filled with a shoot, if not with a very nice holiday in the mountains somewhere in the world. And yeah, that is the life I want to live. I want to fill every day of my calendar with work and just experiencing life. Touch wood, it happens for you very, very soon. I think the way that your journey has taken off, I can visualize it happening very soon, and I hope so it does. But when you work in a multi-starrer, and why I ask this, because I've heard it so many times, actors say that you and your co-stars need to be very secure on that set to also elevate each other's performance. Even if one actor is a little insecure and cares only about his or her part, it all goes down the drain. How was the energy on this one? This one, I think everybody was just so giving. Because they were so comfortable, they know the franchise is great, and Induji just makes it so easy to work in his film, and it's so much fun, and me being new also, Ritesh was so motivating, and he was so great with me, being someone, because they don't know what I have done, they don't know who I am, they don't sit and watch interviews at home, and they don't do all of that. Rekha ji watches my interviews, which I wish she's told me, but not everybody sitting and watching कि अंजलि कौन है. Nobody's interested. सब अपना अपना काम कर रहे हैं. And now that they know me and the way they see me, and I love the shock that they get, अरे this girl is so good, let's do more. And they want to do more. They're not trying to put me down. So I just hope मुझे ऐसे लोगों के साथ काम मिलते रहे, जो मेरी काबिलियत देख के मुझे और काम दे. That day जब गुलाबी साड़ी, I didn't say this to anybody, गुलाबी साड़ी जब रिलीज हुआ, teaser went mad. Everybody went crazy कि अरे ये लड़की को कहाँ से ये गाना मिल गया, लाइक अरे ये कहाँ से एक ऐसी हीरोइन हुई है. हाँ जो बोलना है बोलो, हूँ तो मैं हीरोइन ना. Exactly. तो I just messaged Induji. I just said, Induji, I just wanted to say thank you. That's it. I just wanted to say thank you.
एंड ही इमीडिएटली कॉल मी, बेटा क्या थैंक यू, यू नो तूने इतना अच्छा काम किया है, मैं तू देख ये गाना कितने अच्छे से प्रमोट होता है, यू नो सी व्हाट दे आर डूइंग, सी व्हाट दे आर डूइंग फॉर मी एंड व्हाई वुड दे डू दिस फॉर मी, यू नो देयर इज नो रीजन बट they believe in me and they believe that I can, you know, be better and do better and they all. इंदु जी, मेरी मॉम सेट पे आई और इंदु जी बोलते हैं इसको तो मैं अभी हर पिक्चर में लूंगा, क्या मस्त एक्टिंग करती है, and you know it was great. Also because you deserve it. Yeah. Because you worked hard for it. You know it's just you believe it, but you know because अगर वो चीजें वैसे नहीं होती तो you feel like maybe I don't, you know, but then there are days like these that make you believe that yes I do deserve it. You know, you said one thing which मेरे तो दिमाग में नहीं आया था because we don't think like that. But ये किसको ले लिया and ये कैसी heroine and all that. Do people still say all of these comments things? देखो कितना अटेंशन मिल रहा है मुझे, which is great, but देखो कितना लोगों की असलियत भी सामने आ रही है, उनके इनसिक्योरिटीज सामने आ रही है. And I hate talking about my body, but everybody obviously ends up talking about my body at the end of the day. So I have to defend it. कि भाई I have to be so good that people see beyond my weight and beyond everything else. ऊपर से मैं 6 फुट लंबी हूँ, तो अब कास्ट करेंगे भी तो किसके साथ करेंगे, तो और भी बहुत problems आ जाती है मेरे साथ, you know, which I understand. I'm not delusional. You can't cast me with an actor who's half my height, you know, which is impossible. There is no height shaming or anything involved in this. It's the reality and a matter of fact बात है ये. And they will not cast me with someone that, and it's an aesthetically pleasing medium. You have to be looking aesthetically pleasing and you know जब तक अगर वैसी स्क्रिप्ट ना लिखी जाए तब तक मुझे काम ही नहीं मिलेगा, you know, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए. तो हूँ मैं आई हूँ, अभी देखते हैं, बदलते हैं चीज़ें. Definitely one project at a आप time. मेरे कमेंट्स खोल के देख लीजिए कितने लोग क्या क्या लिख रहे हैं, बट इट्स ओके, मैं हीरोइन हूँ. Of course आप हो. But does it get to you sometimes or of now course you've it does. made peace? I'm human. It does get to me. मेरा तो बहुत मन करता है क्या क्या रिप्लाई करूँ पर नहीं, पिक्चर देखेंगे उनको रिप्लाई मिल जाएगा. आपने कोई टकला रिप्लाई किया था, वो बहुत फेमस हो गया था, सबने न्यूज़ आर्टिकल किया था. मेरी टीम ने मना किया है अंजलि बस कर. नहीं आई फील वेरी गुड बिकॉज नहीं होता ना, देन आई एक्चुअली कमेंटेड समथिंग एंड ब्रांड्स जस्ट सेड वी कांट, यू नो, एसोसिएट विद समवन हु, क्योंकि मैं तो गाली गलौज पे आ जाती हूँ ना, क्योंकि अगर आप कुछ बुरा बोलेंगे तो मैं 100 भी बुरा बोलूँगी, बिकॉज यू स्टार्टेड इट ब्रो. मुझे तो पता भी नहीं तुम एग्जिस्ट करते हो. जस्ट बिकॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच है डजंट मीन तुम कुछ भी बकवास बोलो. तो आई वाज लाइक नहीं, गाय भैंस हिपोपोटामस जो बोलना है बोलो, एलिफेंट बोलना है बोलो, मैं टीवी पे हूँ, चुपचाप घर पे बैठो. आप देख रहे हो मुझे बैठ के, आप देखते रहो ये एलिफेंट हिपोपोटामस गाय भैंस क्या क्या करती है और कहाँ कहाँ जाती है. वाओ, हैट्स ऑफ. गाय की पूजा करते हो और यहाँ पे गाय भैंस बुला रहे हैं. And how is that even an insult? मतलब क्या लगता है इन लोगों को? And even Moti is not an insult. I've stopped, you know, now last few days I have stopped thinking of Moti as an insult. Stop thinking of it like that. Moti is not an insult. You know, because दिमाग में बना लिया ना, मोटी अच्छा, मोटी बुरा, पतली अच्छा. Oh, you've lost weight is a compliment. Oh, you've put on weight is a bad thing. Why? It's a fact. Exactly. It's not a good or a bad thing. वो हमने कंडीशनिंग डाल दी है. That is so true. You know, काली हो गई है, गोरी हो गई है, क्या है भाई, तुमको क्या इंटरेस्ट है अगर मैं काली हो गई हूँ तो? तुमको क्या इंटरेस्ट है मैं मोटी हो गई तो? तुम्हारे हाथ का निवाला थोड़ी छीन के खा रही हूँ. अगर वो भी छीन के खा रही हो तो उसके पैसे दे दूंगी. कोई बात नहीं, अपना अच्छा चल रहा है और चलेगा. But you know, my biggest issue with biggest issue with social media overall is that if I do an interview and if it goes viral or something happens, people, if they want to talk shit, they will not talk about it. Something goes viral. I'm like, what are these people commenting? मुझे भी अभी सब last few days से मेरे जब भी कोई भी प्रोजेक्ट आता है ना, वो कुछ महीने ना मेरे को बहुत डर लगने लगता है पहले से कि अभी ये आने वाला है यार, अभी ये आने वाला है कुछ, अभी कुछ लोग बोलेंगे, क्योंकि मुझे जितना देखेंगे लोग बहुत खुश होते हैं ना कि मेरा नया प्रोजेक्ट आ रहा है, वाओ मैं इतनी दिखूंगी. मेरे को और टेंशन होती है कि इतना प्रोजेक्ट आ रहा है, मैं अभी इतनी दिखूंगी, उतना ही लोग मेरे पे कमेंट करेंगे, अच्छा भी करेंगे पर बुरा भी करेंगे. तो अगर कोई चीज़ आपको 500 बार बोले ना तो आप बिलीव करने लग जाते हो, यू नो, कि इसको क्यों लिया पिक्चर में, अरे हाउ मेनी, यू नो, व्हाट मस्ट शी बी डूइंग स्पेशल फॉर पीपल दैट उसको पिक्चर में ले रहे हैं. तो बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं. तो आई एम लाइक, अंजलि, हेड डाउन, कीप वर्किंग, जस्ट कीप वर्किंग. आजू बाजू देखो ही मत, ब्लाइंडर्स लगा लो, जस्ट कीप वर्किंग, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. कुछ तो सही कर रही हूँ ना, अगर मुझे इतना आगे तक भगवान ने पहुँचाया है. कौन आया है इस कैटेगरी में इतना आगे आज तक? तो लेट्स पेव द वे फॉर सो मेनी अदर गर्ल्स हु हैव अ ड्रीम. And if you're good and if your intent is good, if you're really good at what you do, you just have to, अगर आप फेम के लिए कर रहे हो, दूसरे 3 चीज़ों के लिए कर रहे हो, वो आपके ऊपर है.
अगर आप सच्ची में काम जानते काम हो, कर रहे हो। अगर आपको काम आता है, वो ऑडियंस पकड़ लेती है अगर आता है कि नहीं आता है, वरना मैं यहाँ तक नहीं आई होती। Definitely. तो अगर आपको काम आता है और अगर आपका इंटेंट क्लियर है, इंटेंट अच्छा है, प्योर है, तो आप निकल जाओ Wow. लाइक शर्वरी। But you know, even in the trailer we saw थोड़े से है fat shaming, body shaming वाले jokes है, which is honestly the society we live in. Have we not कब से heard मैं these यही बोल things? रही हूँ सबको जो मुझसे क्वेश्चन पूछ अच्छा, रहा है। आप ये बोल रहे हो। आपने ही बोल But दिया। No, because I have Because also you done also it. go I know through it that. ना, I know it. हाँ। This is the society वो तो we होगा ही ना, genuinely live क्योंकि in. अगर जब तक मुझे लोग मोटा इंटरनेट पे बुलाते रहेंगे उतना मोटा मुझे पिक्चर में भी बुलाएंगे ना। तुम यहाँ बंद करो, तुम बोलो नहीं अंजलि को हमको नहीं देखना है ये ऐसे उसकी रोल में, identity नहीं ये है, उसकी आइडेंटिटी exactly. नहीं है, शी इज एन एक्टर, शी इज दिस, शी इज दैट, तो लिखेगा ना कोई रोल मेरे लिए। एंड दिस इज नॉट रॉन्ग, इट्स नॉट रॉन्ग। Absolutely. तुम कल किसी को मोटा बुला के हंसे होगे, तुमने किसी का मजाक उड़ाया, तो क्यों नहीं हम उड़ा सकते, मजाक उड़ाने दो। अब मैं उस पार्ट को कैसे प्ले करती हूँ वो मेरे ऊपर है, उसके लिए देखिए धमाल 10 जुलाई को। Fantastic. But you know, my only issue from internet or from people in general is that if they come and speak shit about my work or her interviews are not हाँ, right, वो it's चलेगा। okay. I will take it. But the body, minute, because easy target yeah, ना। but the minute something goes viral or somebody wants to throw hate, they will throw hate on my body. Which is so problematic because you don't have anything, which means I'm fantastic at what I do. That's why you don't have जलते anything else. हैं। उनको लगता है मैं यहाँ पे डाइटिंग कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, रोज जिम जा रहा हूँ, मेरे पास खाने के पैसे नहीं है, मेरे पास कुछ ये नहीं चाहिए। वो लड़की इतने मस्त कपड़े पहन के, अच्छी घड़ी पहन के, मस्त डायमंड का ब्रेसलेट पहन के बैठी है, वो मोटी है, वो कर सकती है, मैं नहीं कर सकती। यू मेक देम फील लाइक अ लूजर, Yeah. बिकॉज आप उनको अपनी रियलिटी बता रहे हो कि मेरे पास इतनी सारी चीज़ें जो तुम्हारे हिसाब से कॉन्स है, इन सारे कॉन्स के साथ भी मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं इसको इंटरव्यू कर रही हूँ। तुमने क्या क्या उखाड़ लिया लाइफ में, तुम फिर भी यहाँ नहीं बैठे। सो you're doing great. Yes, kudos. But you know, now of course there's a list of things you've done, and now I'm sure casting directors, filmmakers, how they look at you, their perspective has also changed because being a part of a Dharma movie, then not only that, proving your skills through all the roles that you've done afterwards, now doing such a beautiful film, a song dedicated to you. Do you think the pressure has increased, and do you also think now casting directors will look at you in different light? I want the pressure to increase. You know, the funniest part about me is मैं कोई casting director से बात नहीं करती। अच्छा। मैं कोई director से बात नहीं करती। मुझे 100 सालों से बोला गया इसको मैसेज करो, उसको हाँ। मैसेज करो, मुझसे नहीं होता। होता। I don't know why. मैं थोड़ा ऐसे बंजारा इंसान हूँ, मुझे जाके माउंटेन्स में चिल करना है, मुझे सब नहीं हेलो सर हाउ आर यू, लेट्स मीट, लेट्स सी इफ यू हैव समथिंग फॉर मी। अगर उनको आपको पार्ट देना है ना, आप कई जंगल से उठा लेके आएंगे आपको और आपको पार्ट देंगे। दे विल फाइंड यू। सो इफ समथिंग इज नॉट मेंट फॉर यू, इट्स नॉट गोना कम टू यू। आई बिलीव इन द यूनिवर्स वर्किंग इट्स वेज, एंड ऐसा भी नहीं कि आपको बस खाली बाहर घर पे बैठना चाहिए। आई एम ऑल्सो मे बी रॉन्ग, मे बी अगर मैं और आउट देयर जाऊँ अपने आप को और बाहर और जाके तैयार हो के बाहर फोटोज खिंचाऊँ, मे बी शायद लोग मुझे देखें, बट नहीं है मेरे में वो यार। मैं आज भी तैयार हुई, मुझे बुरा लग रहा है कि सबको वेट करना पड़ा। मेरी फोटोशूट हो रही थी, अभी अगर फोटोशूट नहीं की तो साड़ी वाले अपसेट हो जाएंगे तो वो सब भी करना पड़ता है। तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस जॉब, इट्स माई जॉब। बट फॉर मी आई एम अ लेबर आदमी है, मुझे लेबर करवा दो, मुझे 30 घंटा शूट करवा दो बिना सोए, मैं खुशी खुशी कर लूंगी। विद एवरीथिंग दैट कम्स विद इट, आई एम नॉट ओके विद। I'm not that person only who wants that much attention. मुझे attention चाहिए मेरे काम की वजह से, मुझे attention ये नहीं चाहिए कि अरे इसने आज क्या ये क्या। It's great when you get that attention, but I don't want the wrong kind of attention. I want the right kind of attention from the right kind of people who will get me more jobs, who will make my house keep running, who will give me that car I want to make my mother sit in. Who will make me give that holiday home that I want to give my mother, and make sure she spends her time there with me and my dog running in the field, in the farm. You know, I want that life. एंड उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ रहा है मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, but there's always more to do and always more to learn. Absolutely, no, agreed. But you know, you also look like somebody who's a no-nonsense person. Like, Oh, yeah. definitely, nobody can like mess with you so much, and that could also make people see you as intimidating. Have you heard that? Very intimidating. People are scared to come and talk to me. Also, men. Very scared to come and talk to me. They're like, एक तो ऊपर से 6 फुट की लड़की तुम्हारे आगे खड़ी हो जाए, वैसे ही डर जाते होंगे। मर्दों की मर्दानगी चली जाती है भाई पे कि True, अरे they get इससे क्या ही insecure. बात करूं मैं। तो it's not like that. People who know me know what a softie I am. And for that you have to be really close to me, and for that you have to cross many barriers. I have to push you away 100 times, and then, you know, if you're still in my life, then that means I love you. So I just believe that everybody's just going to abandon me and leave me and go. So I just try to stay detached from people. I don't get too involved, and they think that maybe, you are not, you know,
caring about my life as much or something like that, but they don't get where I'm coming from. So that's okay. And it's just a task for me to keep people in my life and believe that they're going to be in my life and not get intimidated by the things I say and the things I do. But that's not how life is, you know. So जो रहते हैं वो रहते हैं, जो नहीं रहते हैं वो नहीं रहते. Someone just recently told me everything in life या तो win है या तो learn है. Yeah, that is so true. So either you win some, you learn some. But does that also make it difficult for you to be connected to people you work with? Because वैसे भी बोला जाता है इस इंडस्ट्री में आप दोस्त नहीं बना सकते. बहुत कम है. I think हर प्रोजेक्ट से कोई एक इंसान तो मेरे साथ आगे चलता ही है and I become friends with them. बट सी यार सब आई तो थिंक मैं रोज़ बदलती हूँ, मैं तो हर पल बदलती हूँ. यू नो, आई सी समथिंग एंड आई थिंक ऑफ समथिंग. तुम्हारे थॉट प्रोसेस 5 साल पहले अगर कोई इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कुछ सोच रही हूँ, 5 साल बाद आई थिंक इट कैन बी डिफरेंट. You know, you can think differently about the same situation. You can have a different opinion about it. You can learn and you can grow and you can evolve. And there are some people that don't evolve, right? There are some people who just stay the same. Before and after में अगर कोई फर्क नहीं है तो फिर तुम्हें What's the point? You know, what's the point? So I think I constantly keep learning and I constantly keep changing. And with your अगर आपके evolution से लोगों को problem होगी तो वो छूटते जाएंगे. Absolutely. वो छूटते जाएंगे, अपने आप छूटते जाएंगे. As it should, actually. As it should. Doesn't matter. Yeah. But lastly, before we wrap this conversation, there must be so many people watching this conversation and wanting to be like you or wanting to enter this field. They must be, of course, wanting to be a part of this industry, starting, they don't know where to do what. What would be that one most important advice that you would want to give them? Just make sure that you are the best at what you do. Make sure that if you get that one audition, you get that one part, you crack it. Because you're so good कि आपका पहले 10 सेकंड देख के डायरेक्टर बोलना चाहिए अरे ये मेरे को चाहिए पिक्चर. I think that is the one thing that I would say. If you're good ना, there's a 3-minute dialogue, right? काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी. तो I'm an ardent believer in that. I think बहुत लक का भी पार्ट होता है, बहुत टाइमिंग का भी पार्ट होता है, पर जब वो टाइमिंग आए, आपको वो एक अपॉर्चुनिटी मिले. अगर मैंने टीवी नहीं किया होता और मैं कॉन्फिडेंट नहीं होती अपने आर्ट पे, तो मुझे अगर रॉकी रानी का आता इंटरव्यू ऑडिशन तो मैं शायद नहीं क्रैक कर पाती. बिकॉज आई वाज सो कॉन्फिडेंट एंड आई न्यू व्हाट आई वाज डूइंग. आई वाज रेडी फॉर इट. You know, people say TV क्यों किया ये? अरे मेरे को TV was great for me. Which actor gets to work 30 days a month? Not your biggest superstars get to work 30 days a month. जितना एक्टर्स काम करते हैं उतना किसी को काम करने को नहीं मिलता टीवी में जितना करते हैं. तो आई थिंक if you use everything to your advantage and you try to make yourself keep getting better, then I think everything is a tool to just do better and better in life. Fantastic. On that note, thank you so much for joining in. I hope all the days of all your years are packed with shoots, and beach mein one day you give it to us also and meet us also and do interviews. Done. And all the very best for the Dhamaal 4. Thank you so much. Most welcome. Namaste, मैं हूँ अंजलि आनंद and you're watching me on FPJ Showbiz.